वॉइस तो क्लियर है ना सभी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं वॉइस में? रोहित, जो भी एंट्री न्यू स्टूडेंट्स आएंगे आपके पास पॉपअप आ रहा होगा, एंटर कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने कुछ वेक्टर स्पेस के सब स्पेसेस पढ़े थे, जिसमें हमारे पास n टपल था, we have n टपल्स वेक्टर स्पेस, we have write some 9 to 10 सब स्पेसेस, राइट? 9 to 10 सब स्पेसेस लिखे थे। ऐसे नेक्स्ट हम लोगों ने जो वेक्टर स्पेस पढ़ा था वो कौन सा था? व्हाट इज वेक्टर स्पेस? पॉलिनोमियल वेक्टर स्पेस, राइट? दैट इज a naught x, sorry, a1x and a2x square and so on up to an x to power n। इस तरह से था an x to power n, such that all ai's comes from some field will at in general real field, right? Now we define some subspace w that is equal to collection of all polynomials comes from V, which is vector space, such that some conditions, we define some different conditions first. Sum of all coefficient is 0. This is subspace or not? Sum of coefficients is 0. This is subspace or not? बताइए, this is subspace or not? ये किसका सबस्पेस होगा या नहीं होगा? ये हमारे पास एक सबस्पेस होगा। यहाँ पर देखिएगा, इसको किस तरह से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। जैसे V है हमारे पास, दिस इज V, we can write this is similar to some vector space which have n tuple vector space in which a naught, a1 and so on up to an. This is n plus 1 tuples vector space such that ai's comes from real number. This is similar to V or not? Or isomorphic? This is isomorphic to V or not? V क्या isomorphic होगा या नहीं होगा? यहाँ पर मैंने क्या किया कि जो this is a V is a vector space of polynomials, then we write a different this V prime is collection of n plus 1 tuples comes from real numbers. This is also a vector space with n plus 1 tuples. Then if we write a condition, sum of, similarly in first, sum of all ai's is equal to 0, I is equal to 0 to n. This is a subspace or not of this vector space, right? Similarly, sum of all coefficients is 0 is also a subspace of V. Also you write sum of all coefficients is equal to some number which is real. This is also a subspace or not? If you write sum of all coefficients must equal to some x comes from real number, this is subspace or not? Sum of all coefficients equal to
some x which comes from some real number, any real number. This is subspace or not? Rohit, this is subspace. Lavani, okay. This is also a subspace similar to we write in n dimensional, sorry, n tuple subspace. Like this is a n plus 1 tuple subspace. So we write a condition, sum of all coefficient must be some number. This is a condition, right? So we have a one coefficient is dependent on another all other coefficients, right? Now next one, yes, yes, subspace of V. This is subspace or not? Yes, yes. Sum of all coefficients of sum of all coefficient must be zero. This is condition for subspace or not? True or false? This is subspace. We write V. V is a vector space which collect all the real polynomials up to n degree, right? Then we have coefficients in a naught up to an, because of if we have n degree polynomial, then we have coefficients n plus 1, because of one coefficient is constant also. Then this is similar to we have n plus 1 tuples vector space, almost similar. Tuples, yes, this is a vector space. We write in blue color on right hand. This both are similar. Some difference, we write in left hand only x in multiple. So both are different subspace. Yes, yes. This is, so this is no. We write this additional information for subspace, right? Not for this. Okay. This is not additional information for V prime. This is additional information for subspace of V prime. Yes, yes. We explain with the help of V prime, because of if we define a mapping from V to V prime, there exists a 1 on 2 mapping or not? If we define a T, because of in linear algebra we define transformation, we also denote by another symbol. So we define T from V to V prime if T of some polynomial Px, which like a naught plus a1 x and so on up to a n x to power n, that maps a naught a1 and so on a n. This is 1 on 2 mapping or not? This is 1 on 2. No, this is that a1 2 and that dot n tuple n plus 1 tuples. If this is 1 on 2, then V and V prime both are symmetric, sorry, both are similar or isomorphic, similar to group or field or ring. If we define a 1 on 2 homomorphism, that is a isomorphism. So all properties of V is similar to all properties of V prime. So if summation of all ai's is 0 is subspace of V prime, then this is similar to sum of all coefficient is 0 in vector space of polynomials.
This is also subspace. Yes. No, no. We say only sum of all coefficients is 0. This is a subspace. Similarly, all tuples, sum of all tuples is 0. This is a subspace of V prime. Similarly, this is subspace of V. Both are different. This one number is subspace of V. Similarly, this one number is subspace of V prime. Both are almost similar. We can also define this one to one is a homomorphism. This is subspace, right? Okay. We write a W in which all polynomials up to n degree, right? All px comes from V, right? And sum of all coefficients is 0. This is a subspace. Sum of coefficients is equal to 0. And another W prime in which a naught, a1 and so on an such that summation of all ai's is equal to 0. And this is defined on real number, right? Both are vector spaces because of all subspaces itself a vector space. W and W prime are both are vector space. Both are vector space or not? Yes. So we can define a homomorphism or any mapping from W to W prime. Same mapping. This T is defined on W to W prime. We say W and W prime are also isomorphic. Nothing else. Only we define W and W prime are also isomorphic. Similarly, in a group, if we have two groups which is isomorphic, then if a group has some subgroup, then another group also a subgroup of similar kind, right? Yes. The V and V prime both are isomorphic if V prime has a subspace, then there exists also a subspace which is similar to that subspace which is subspace of V, right? मीन्स V प्राइम के पास यदि V प्राइम दोनों हमारे पास सिमिलर हैं तो V प्राइम का जो सबस्पेस होगा उसके आइसोमॉर्फिक कोई एक सबस्पेस एग्जिस्ट करेगा जो कि V का सबस्पेस बनाएगा. ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? यस, एग्जिस्ट करेगा ही, एग्जिस्ट करेगा ना. हाँ, करेगा ना. तो मैं यहाँ पर ये क्लियर करना चाहता हूँ, यदि आपको V पता है तो उसकी हेल्प से आप सॉरी V प्राइम पता है, V प्राइम के सब स्पेसेस आपने पढ़ लिए है ना लास्ट क्लास में, ऑल सब स्पेसेस ऑफ V प्राइम, then that subspaces help you in writing subspaces of V.
उसके करस्पॉन्डिंग आप राइट कर सकते हैं ना। ओके, नेक्स्ट सबस्पेस is subspace or not. If we write px is equal to p of minus x, maybe in form or maybe not. Yes, yes, we can write only. This say become a subspace or not. What do you mean by px is equal to p of minus x? This means collection of all even polynomials. If we multiply something, some constant number, then polynomials remains even or not. Even रहेगा. Yes. If we add two even polynomials, then this is also a polynomial or not. If we add one more thing, if we have a polynomial, we don't know that is even or odd, right? So we can write in the sum of even and odd polynomial. We have a polynomial, we don't know that is even or odd. Okay, then we can write that polynomial in the part or sum or difference of one even and one is odd polynomial. लिख सकते हैं. Okay, then another one example, if we write px is equal to minus of px, that makes a subspace or not. What is definition of this? This is a odd polynomial. This makes a subspace or not. Okay, कोई और किसी का ये आंसर ये होगा या नहीं होगा सबस्पेस? होगा. क्या कोई ऐसी पॉलिनोमियल बता सकते हो कि दो इसमें क्लोजर या कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड ना हो, या नहीं पॉसिबल है ऐसी कोई? What do you mean by odd polynomials? This is collection of odd degree polynomials or odd polynomials. What is odd polynomial? Let's write some x plus x cube plus x to power 5. This is a polynomial in this fourth subspace or not? ये और polynomial है. और first thing, zero, odd or even. First we need to check for subspace zero exists or not. Identity. Zero polynomial is even or odd. Because of P0 means P0 or some P0 we define
this is equal to 0, right? So we can also write 0 is equal to minus times 0. Nothing difference, कोई भी इसमें difference है? तो clear है ना? So this is a subspace. इसमें किसी को कोई डाउट है? Yes. हाँ. एंड यहाँ पर आप थर्ड और फोर्थ में दोनों में बताइए इनका जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर ऑफ दिस इफ वी ड्रॉ इन द प्लेन, व्हाट से व्हाट अबाउट थर्ड एंड फोर्थ, क्या कहेंगे इनके बारे में? कुछ ग्राफ्स के बारे में कुछ बता सकते हैं? जितनी भी पॉलिनोम जितनी भी पॉलिनोमियल्स आपके पास एग्जिस्ट करेंगी सभी के ग्राफ के बारे में जनरल कोई स्टेटमेंट बता सकते हैं? ओके, राइट. यस, राइट. थर्ड इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस बिकॉज ऑफ ऑल इवन डिग्री पॉलिनोमियल्स किस तरह की होंगी, या तो इस तरह से होंगी या इस तरह से होंगी, जहाँ भी होंगी इस तरह बनेंगी, इस तरह बनेंगी, यही बनेंगी ना पैराबोलास. बिकॉज ऑफ इन थर्ड all the polynomials in which power is form of 2n, right? 2 के मल्टीपल में होगी पावर, इवन होगी. सेकंड केस में हमारे पास जो भी बनेगी वो इस तरह ही बनेगी, उन सभी का जो भी आएगा इस तरह हो सकती हैं, बट वो ओरिजिन से पास होंगी क्योंकि वहां पर रूट एक जीरो ऑलवेज मिलेगा, फोर्थ में मिलेगा ना, जीरो एक होगा रूट. क्या यहाँ पर फोर्थ में और थर्ड में कलेक्शन ऑफ ऑल कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स एग्जिस्ट करेगा? जीरो तो दिखेगा, दोनों में मिलेगा, but except 0 there exist constant polynomials in any of both. So yes, थर्ड में ये मीन्स इवन पॉलिनोमियल्स में कांस्टेंट्स एग्जिस्ट कर जाएंगी because of constant is also a x to power 0, this is not a odd, because of in fourth collection of all polynomials which power is odd, right? So constant polynomials exist in third, not in fourth. ये यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? If you define next some p of alpha that is equal to 0 and alpha is equal to 1 to any n, this is a subspace or not? Or no, any of, एक 1 minute, first we define alpha as 0 is equal to 0. हाँ, नहीं, बाकी सबके लिए जीरो हो भी सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, नो कंडीशन फॉर एनी अदर, जरूर नहीं सब स्पेस बने. वी डिफाइन p 0 0 alpha is equal to 0, this is subspace or not?
How? This is trivial subspace. नहीं. This subspace, how, what is the relation between 4 and 5? Any of you define a relation between 4 and 5 points? This is collection of odd polynomials. Fifth is collection of all polynomials which has 0 is a 0. नीचे वाला सबसेट बनेगा या ऊपर वाला सबसेट? ये बताइए, क्या मैं a1x plus a2x square and so on a n x to power n लिखूं? This is a polynomial belongs in fifth or not? In fifth point. This is part of fifth. This type of polynomials exist in fifth point. We have no constant polynomials, but in fourth you have only a1x, a3x cube, and so on, means odd polynomials. Which is subset? Fourth is subset of 5, not 5 is 4. So fifth is a subspace. Subspace बनेगा ना? Yes. Means no constant term. यहाँ पर कोई भी आपके पास कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, बस यही कंडीशन. किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नेक्स्ट, यदि यहाँ पर 0 की जगह कोई अदर वैल्यू पुट की जाए, p of 1, this is subspace. This is subspace or not? In sixth, we write in the form of write x minus 1 multiply by some b1 plus, sorry, b naught b1 x square and so on b n x to power n. We can write, then multiply by this, so we get b naught x plus b1 x cube and so on bn x to power n plus 1 and minus time of b naught plus b1 x square and so on bn x to power n, right? So we write minus b naught plus b naught x plus, sorry, minus b1 x square, or we also write this in the form of x minus 1 multiply with all coefficients. If we take common b naught here, then we get x minus 1 in multiple of b naught. This is become a subspace. हाँ, बनेगा ना? मान लीजिए कि ये पॉलिनोमियल है हमारे पास इस वेक्टर स्पेस में, दूसरा हमारे पास है दिस इज c0 c1 एंड सो ऑन cn,
x, sorry, this is x, not x square, right? Then sum of both, then we take common x minus 1, then also this equal to 0 when we put x is equal to 1, and if we multiply by any constant, then also we get at x is equal to 1, this is 0, right? So, so this is a vector space. If we apply multiple conditions like p naught, p1, p2 and so on, some fix, this is equal to 0, this is also subspace or not? Like we, yes, p1, p2, this is equal to 0, this is also a subspace. Similarly, and similarly in general, p of alpha is equal to 0 and alpha comes from any real number. Alpha be any real number, or alpha b comes from field. So this is a also subspace. तो यहाँ तक किसी को इशू है? Next, 9 number, collection of all those polynomials p of x is equal to p of 2x. This is a subspace or not? हाँ, या इससे पहले मैं एक और लिख लेता हूँ उसमें, ठीक है? ये लिखा रहा है वन मोर एग्जाम्पल, p of x plus p of minus x is equal to 0. In general, p of x plus p of minus x is equal to 0. What say what is it? इसके बारे में क्या है? This is similar. This is actually fourth number. This is same as fourth number. बनेगा ना? If we put x is equal to 2x, then we get p of x is equal to p of minus x. Similarly, यानी कि p of x is equal to minus of p of 2x. ये बनेगा ना? No, sorry. P of x is equal to p of 2x, or we also write p of x minus p of 2x, that is equal to 0. हाँ, तो ये सब स्पेसेस बनेंगे ना? तो इस तरह से मल्टीपल सब स्पेसेस पॉसिबल हैं. और भी कोई पॉसिबल बता सकते हैं आप लोग? किसका? 9th का एग्जाम्पल, किस तरह के पॉलिनोमियल्स होंगे? बताइए, कोई बताएगा किस तरह के पॉलिनोमियल्स आएंगे यहाँ पर? कोई पॉलिनोमियल, स्मॉलेस्ट पॉलिनोमियल बता सकता है? यस, फर्स्ट कंडीशन, जीरो पॉलिनोमियल एग्जिस्ट, बिकॉज ऑफ यदि जीरो पॉलिनोमियल एक्सपोर्ट करेंगे तो जीरो ही रहेगा, रहेगा ना? तो ये ट्रिवियल होगा क्या? दिस इज ट्रिवियल और नॉट?
Yes, right. So this is a trivial subspace. क्या ऐसा कोई पॉलिनोमियल, क्या नहीं, अगर पॉलिनोमियल नहीं एग्जिस्ट करेगा तो एटलीस्ट जीरो तो कर रहा है ना आपके पास, तो ये ट्रिवियल बन जाएगा। बट एक क्या होगा हमारे पास, सब स्पेस होगा ना, दिस इज ऑल सब स्पेस और नॉट, बिकॉज ऑफ इफ यू राइट सम x, if you put 2x not equal, if we write maybe try to x by 2, then this becomes x but never equal. Or we write in general, okay, we have a polynomial a naught a1x, we apply the condition on this polynomial, right? Apply condition, right? So we get a naught plus, this is actually collection of all constant polynomials, 2a1x and so on and so on. So a naught is equal to a naught, so we have free to choose a naught, right? We free to choose a naught. In constant polynomials, nothing change if you put at x is equal to 2x or x is equal to some alpha x, but change that is to a1x, then we get a1 is equal to 0 and so on, all another coefficients are equal to 0, right? So this is actually ninth is collection of all constant polynomials, right? Constant polynomials. In place of 2, we can also write any alpha p of x that is equal to p of some alpha x, where alpha is 0 or non-zero. Alpha may be 0, then this is also possible or not. Yes. This is also a constant polynomial and alpha belongs to field. तो और कोई क्या पॉसिबल है बताएंगे? इतने पॉसिबल्स हैं हमारे पास सब स्पेसेस, और किसी ने किसी एग्जाम में किसी बुक में कोई स्पेशल सब स्पेसेस पढ़ा हो, किसी को याद है, रिमेम्बर? किसी ने? जनरली आपको यही मिलेंगे, और कोई पॉसिबल तो बहुत हो सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट डायमेंशन है यदि, तो फिर इनफाइनाइट पॉसिबल हो सकते हैं ना। तो पॉलिनोमियल्स में अब आते हैं हम लोग फंक्शंस में, राइट? तो कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, all functions, so we define a vector space, okay, we define a vector space V which is collection of all functions which is real valued function or real functions, collection of all real valued or real functions. Now we define subspace W that is equal to collection of all functions belongs to V, means all real valued functions such that f is, next we write some conditions, define some subspaces. First, collection of all bounded function, this is subspace or not? If we have a bounded function, if we multiply by any constant, then this unbounded becomes unbounded or not? This is also,
Yes, this is also a bounded, and if you add to bounded function, then this is also a bounded function. Clear है? Second, if we have a periodic function, collection of all periodic function, so if you multiply any constant, then this is also a periodic. Sum of two periodic function is periodic or not? Period is different, but that is periodic. And collection of all monotonic function, monotonic, then multiply any constant, then also monotonic. If add to monotonic function, then resultant is also a monotonic. Next, collection of all continuous function. This is a subspace. Continuous, continuous, uniformly continuous, uniformly continuous, if you multiply any scalar, does affect uniform continuity. So similarly, if continuous function is a subspace, so uniform continuous is also a subspace. Because if you add to a uniform continuous function, that is also a continuous, sorry, uniform continuous. And if we collection of differentiable function, there is many definitions of uniform continuity. So we many 12 to 14 points of continuity. We also define some continuity if a differentiable is bounded, differentiation is bounded, one of condition. If your function are continuous and differentiation is bounded, then we say uniform continuous, or we say in some interval function is continuous, then also continuous at end points, then we say uniform continuous. Or if function is Lipschitz, then is also a uniform continuous. This is all the conditions and many different conditions, right? और भी कोई कंडीशन है किसी को याद है? कंडीशंस बहुत है यूसी की, बट जनरली आप लोग कौन सी यूज करते हैं? एक तो मोस्टली जो जनरल एग्जाम में यूज होती है वो आप बाउंडेड डिफरेंशिएशन से करते हैं, या फिर एंड पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, या फिर लिपचिस से करते हैं, यही करते हैं ना? यही दिन बाकी यूज करने के लिए बहुत कंडीशंस है. कलेक्शन ऑफ ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये भी होगा ना? नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ, बताइए कोई और, आप लोग बताइए. सब स्पेस क्या पॉसिबल है?
यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट फंक्शंस पर डिफाइन है। हाँ वो सीक्वेंस पर होगा डिफाइन, ठीक है, वहां सीक्वेंस पर कर लेंगे बात उसकी, जब सीक्वेंस वाली करेंगे ना। अभी फंक्शंस पर बात करें तो फंक्शंस पर कोई बताइए। इवन फंक्शंस भी होगा, मींस एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, एंड ऑड भी होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, ये भी होगा ना। 8th नंबर में आप मोस्टली लिखा देखेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, बोथ आर सिमिलर, ठीक है ना। ये यहाँ पर एक और हम डिफाइन करते हैं कि एफ हमारे पास है या तो जीरो फंक्शन हो, ठीक है ना, आइदर जीरो और फाइनाइट जीरो। तो ये केस सब स्पेस बनाएगा या नहीं बनाएगा। एफ आइदर जीरो और एफ हैज फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस। अब यहाँ पर आइदर जीरो मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यदि फाइनाइट नंबर ऑफ जीरो की बात करें तो उसमें जीरो आप इंक्लूड करेंगे नहीं करेंगे, डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ सब स्पेस नहीं बनेगा। नहीं तो इसमें इसीलिए मैंने ऐड किया ना एफ आइदर जीरो, इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो तो हो रहा है ना, इसीलिए इंक्लूड किया है एफ आइदर जीरो, क्योंकि अगर उसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो फिर जीरो मिल जाएगा, फिर फाइनाइट जीरो वाला केस फिर हो जाएगा, तो वहां पर नहीं होगा, ठीक है ना। और कोई। क्या। हाँ हाँ ये सब स्पेस है, ये सभी सब स्पेस हैं। एफ बेनिसिस एट जीरो, दिस इज सब स्पेस और नॉट। कन्वर्जेंट, जैसे कन्वर्जेंस टू जीरो। हाँ जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, देखो फर्स्ट कंडीशन, यदि मैं यहाँ पर लिखूं एफ बेनिसिस एंड पर्टिकुलर अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू आर, then we have condition failed, zero is not there, right. If we write f vanishes at some alpha which is non-zero, okay, so identity is not present in that, first condition fails. If we write one more example, नहीं f को मैं अदर जगह कहीं वैनिश करवा दूं, alpha which is non-zero, right, then identity is not present in this, because of zero is not, zero function is vanishes at zero, so 11th is not a subspace, right, but 10th is a subspace because of constant functions is not present in 10th.
जीरो के अलावा और कोई कांस्टेंट फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो जीरो पर नहीं वैनिश होगा। ठीक है। 10th 11th में तो जीरो ही नहीं होगा। नहीं, कहीं पर करेगा, वो एक सेट बना लेगा, बट सब स्पेस नहीं होगा। दिस इज अ सेट। नहीं, 11th में, 10th में क्यों? ठीक है, यदि कोई जीरो पर मैनेज कर रहा है तो यदि कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जीरो में? तब भी तो जीरो ही करेगा ना, कोई इफेक्ट तो आएगा नहीं, हमेशा जीरो ही मिलेगा ना। हाँ, 10th सब स्पेस है बट 11th नहीं। क्लियर है? और कोई पॉसिबल है, बताइए। लाइक एफ एज पॉइंट ऑफ लोकल एक्सट्रीमा at x is equal to 1 by 2. This is a subspace or not? Point of local extrema means f dash has a 0 at 1 by 2, right? And f dash 0, f double dash 0 is not equal to 0. That means f has repeated 0 at 1 by 2. Two zeros means x minus 1 by 2 whole square is present in f, but x minus 1 by 2 whole cube is not there, right? Sorry, this is 12. यहाँ पर देखिएगा कि x माइनस 1/2 की पावर 3 क्या पॉसिबल है f को? रिपीटेड जीरो पॉसिबल है ना, x माइनस 1/2 होल स्क्वायर। नहीं, पावर 3 में नहीं मिलेगा ना, पावर 3 में एक सैडल पॉइंट बन जाएगा। जैसे x माइनस 1/2 मैंने एक पॉलिनोमियल कंसीडर किया पावर 3, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे टू करेंगे जो भी करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट मिलेगा जो कि क्रिटिकल पॉइंट होगा। बट जब थर्ड डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 इंटू एक्स माइनस 1/2, ये जीरो हो रहा है, जो कि फिर हमारे पास ये मैक्सिमा एंड मिनिमा नहीं होगा ना। तो यहाँ पर हमारे पास 12th में क्या है, f dash has a 0 at x equal to 1/2 or any other point we write. Net, this is not fixed 1/2, right? जीरो है एंड f डबल डैश नॉन जीरो है 1/2 पर, बस यही कंडीशन है ना इसकी। तो वो सभी हमारे पास फंक्शंस आएंगे जिनका f डैश जीरो है x पर, x इक्वल टू 1/2 पर, बट f डबल डैश इज नॉन जीरो एट x इक्वल टू 1/2। तो यदि उनको ऐड करेंगे
या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट आएगा? यदि एक एफ फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव x इक्वल टू 1/2 पर 0 है, एक c है, तो मींस f डैश g डैश के पास दोनों के पास कॉमन फैक्टर x माइनस 1/2 होगा। अब दोनों हमारे पास नॉन जीरो हैं, तो f प्लस g क्या आएगा? बिलोंग करेगा नहीं करेगा? ये बताइए। लोकल बोला है, नॉट ग्लोबल। लोकल हो सकता है ना, या नहीं होगा? यहाँ पर मेंशन नहीं किया है कि मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा। एक्सट्रीमा बोला है, मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है। बन जाएगा ना? तो शायद यहाँ प्रॉब्लम आती है कि उसमें जैसे माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो मिनिमा आ जाएगा। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम आती ना, एक्सटर्नल कंपोजिशन में, या मिनिमा के केस में आती तब भी ये आती। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? और कोई पॉसिबल है? बताइए। Now we define a function 13 all functions which have bounded variation BB in 0 1. This is subspace or not? हाँ, ठीक है। यदि बाउंडेड वेरिएशन है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे तब भी बाउंडेड वेरिएशन रहेगा। और यदि दो फंक्शंस हैं उनका सम करेंगे तब भी बाउंडेड रहेगा ना वेरिएशन। और यहाँ पर तो पूरा रियल बोला भी नहीं है, बाउंडेड वेरिएशन 0 और 1 पर बोला है, क्लोज इंटरवल में बोला है, तो इसमें तो पॉसिबल है ना। हाँ, इस इंटरवल में 0 से 1 इंटरवल में बाउंडेड वेरिएशन है, तो ये हमारे पास एक सब स्पेस बनाएगा। रहेगा ना? यहाँ पर एक पॉइंट बताइए कि यदि फंक्शन लिबचिस है टू डिफरेंशिएबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर होगा या नहीं होगा? नहीं, कॉन्टिन्यूअस तो होगा। लिबचिस, ठीक है ना? लिबचिस एंड डिफरेंशिएबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर,
यहाँ पर एक आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा कि डिफरेंशिएबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर में, और वो फंक्शन हमारे पास सब आ जाते हैं, कॉन्टिन्यूस एंड बाउंड्री वेरिएशन होंगे उसके अंदर आ जाते हैं, एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूस एंड उसके अंदर आ जाते हैं इलिप्सिस, इसके बाद आ जाते हैं उसके सबसेट में ही आते रहते हैं, इसके बाद कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल आ जाता है सबसेट। तो उसके बारे में नहीं कह सकते हैं ना कि यदि फंक्शन इलिप्सिस है तो वो डिफरेंशिएबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर होगा, ऐसा नेसेसरी नहीं है। मतलब कि ऑलमोस्ट एवरीवेयर का मीन्स जो भी आपके पास डोमेन है सभी पर डिफरेंशिएबल हो। हाँ, ये मेजर थ्योरी का टॉपिक है। ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर कंडीशन, देखिए ऑलमोस्ट एवरीवेयर की कंडीशंस पे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ठीक है यहाँ पर इसके बाद अब हम आते हैं सेकंड, और कौन सा है, वेक्टर स्पेस सीक्वेंस। नेक्स्ट आपने बोला ना सीक्वेंस पर, तो सीक्वेंस में कलेक्शन ऑफ ऑल सीक्वेंसेस, रियल वैल्यूड सीक्वेंसेस, राइट। V is equal to all sequences such that a n belongs to real number. Now we define some conditions on V that is become subspace a n belongs to V such that, बताइए फर्स्ट, नल सीक्वेंस क्या, कल करें,